Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear Dipsians. I hope you are fit and fine. Welcome to Dips e-learning. Topic of the day is the poem Blades of Grass, penned by or composed by Stephen Crane. It's my second video on the poem Blades of Grass. Blades of grass means घास के छोटे पत्ते या तिनके या घास के तिनके. On the screen you can see the topics which we are going to discuss in today's video. First of all, we will discuss about the poet and poem. Then its structure. Its structure is narrative poem or descriptive poem. Its scene is Day of Judgment. Day of Judgment, Rose Hashir, or setting is heaven. And we will also discuss the figurative language used in the poem. So the figure of speech used are personification and imagery. Then we will discuss theme of the poem, paraphrasing, reference to the context, explanation, and the poem's question answers. Okay students, first of all we will discuss about the poet. This poem is composed by Stephen Crane, who was an American poet, novelist, and a short story writer. Throughout his life, he wrote stable works in the realist tradition as well as early example of American neutralism. He was recognized by the modern critics as one of the most innovative writers of this generation. Innovative, new, modern means he was included in modern writing. He was born on 1st November 1871 and his date of death is 5 June 1900 in Germany. Okay students, now we will discuss the theme of the poem. Theme of the poem is humbleness, and this is a highly imaginative poem. The poet aspires to convey a very important idea that all creatures have been given wisdom to differentiate between good and bad deeds. They will be answerable for their good and bad deeds, and evildoers will be punished harshly, and those who have done good deeds will be rewarded. In this poem, the poet gives us the message that God likes humbleness and repentance, and one should not be proud and one should be humble. And the poet expresses an idea that best deeds are those done without thought of reward. यानी बेस्ट डीड्स, बेस्ट एक्शंस वो होते हैं जो किसी भी थॉट ऑफ रिवार्ड के बगैर किए जाते हैं. एंड ट्रूली वर्चुअस आर दोज वर्चुअस पीपल हु हैव एक्सीलेंट मॉरल कैरेक्टर. यानी वही लोग जो हैं वो वर्चुअस होते हैं who do the best deeds not for the fear of punishment or any sake of reward. जो बग़ैर किसी रिवार्ड के या fear of punishment के बग़ैर जो हैं वो अच्छे काम करते हैं. मतलब वो सज़ा या जज़ा के खौफ से अच्छे काम नहीं करते, बल्कि वो अच्छे काम करना पसंद करते हैं, इसलिए वो वर्चुअस होते हैं और ट्रूली वर्चुअस यही लोग होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम. लेट्स सी व्हाट इज़ पैराफ्रेज. डियर स्टूडेंट्स, पैराफ्रेज का मतलब होता है अपने अल्फाज में लिखना. मतलब पोइट ने जो आइडियाज़ बयान किए हैं उनको अपने अल्फाज में लिखना. पैराफ्रेजिंग इज़ री राइटिंग द पोइट आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग. पोइट के अल्फाज को अपने अल्फाज में लिखना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. आर कन्वर्जन ऑफ पोइट्री लाइन्स इनटू सिंपल प्रोज. जब हम उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं तो वो प्रोज में चेंज हो जाती है. स्टूडेंट्स, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल पैराफ्रेजिंग अ पोएम. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पैराफ्रेजिंग करते वक्त याद रखना चाहिए. नंबर 1, पैराफ्रेज द मैसेज इन सिंपल टेक्स्ट. मतलब पोइट ने जो भी मैसेज दिया है उसको सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें. चेंज पोइटिक वर्ड्स विद सिंपल वर्ड्स. और जितने भी उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स या पोइटिक वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करें. डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा डिटेल फ्रॉम योर ऑन साइड. पैराफ्रेजिंग के अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड नहीं कर सकते अपने साइड से. इट मस्ट बी अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल. और उसकी लेंथ भी सेम होती है. मतलब अगर पोएम के अंदर 4 या 5 लाइन्स आई हैं तो पैराफ्रेजिंग भी आप 4 या 5 लाइनों में ही करोगे और उसकी लेंथ को इंक्रीज़ नहीं करोगे. ओके स्टूडेंट्स, इन बातों को आप माइंड में रख लें क्योंकि सेक्शन बी के अंदर पैराफ्रेज पे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का आपका एक क्वेश्चन आता है जिसके 10 मार्क्स होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट in this poem. Let's do it by an example.
Stanza number 1. In heaven, some little blade of grass stood before God. Okay, paraphrase will be like this. Some little blades of grass were standing in the court of God on the day of judgment in heaven. He asked them about their deeds and actions on earth. They all say one of the little blades began eagerly to relate. Means they all started to relate about their actions impatiently and excitedly. But one of the little blade grass kept quiet and stayed a small way behind, ashamed. But one little blade of grass kept quiet and stood behind others because of shame. Let's do the paraphrase of second stanza now. The second stanza is, presently God said, and what did you do? Paraphrase. God asked without any delay from the little blade of grass about his good and bad deeds that he had done when he was alive. The little blade answered, "Oh my Lord, memory is bitter to me." The little blade of grass replied that he did not remember if he had done any good deeds. And if I have did good deeds, I know not of them. Then God, in all his splendor, grandeur, brilliance, arose from his throne. God was pleased with his answer, and God in all his majesty stood up from his throne. "O little blade of grass," he said, and blessed him. सेक्शन बी में जो दूसरा पार्ट है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे आता है. एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेज हैज़ 10 मार्क्स एंड दीज आर कंपल्सरी, यू कांट लीव ऑन चॉइस. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइए देखते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज रेफरेंस एंड द सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट. इन रेफरेंस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम. And the second part is context. Context means central theme of the poem or explanation. In explanation, you can add anything relating to stanza. और रेफरेंस में आपने लिखना होता है कि लाइंस कहाँ से आई हैं और कौन से शायर ने लिखी हैं. Let's do reference to the context now. Reference. These lines have been taken from the poem The Blades of Grass, written by, composed by, penned by, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, written by Stephen Crane. Context. This poem is a narrative form with a dialogue between God and the blade of grass in heaven on the day of judgment. God said, "Good are those amongst you who have done good deeds and don't feel proud on their good deeds." Allah is pleased only with the little blade of grass who stood aside because it was ashamed of its action. Allah said with all his majesty, "You are the best amongst all." So this was the reference to the context of the poem. Hope you have understood now that what is reference to the context. Let's discuss its exercise question answers now. First question is, what does the blade of grass symbolize? सिम्बोलाइज से मुराद यहाँ पे रिप्रेजेंट या जाहिर करना. द ब्लेड ऑफ ग्रास इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम. द ब्लेड ऑफ ग्रास स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एक्चुअली रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स अकाउंटेबल फॉर देयर गुड एंड बैड डीड्स वाइल लिविंग ऑन अर्थ बिफोर द डे ऑफ जजमेंट. ब्लेड ऑफ ग्रास किसको सिम्बलाइज कर रही है? ह्यूमन बीइंग को सिम्बलाइज कर रही हैं, या पर्सनिफिकेशन उसने यूज़ किए एज ए ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया है, और उनको गुड और बैड डीड्स के मुतालिक पूछा जाएगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट. नेक्स्ट वन इज़, वाई इज़ द लिटिल ब्लेड ऑफ ग्रास अशेम्ड? घास का जो तिनका है या पत्ता है वो शर्मिंदा क्यों है? द लिटिल ब्लेड ऑफ ग्रास वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट रिमेंबरिंग एनी गुड फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ ऑन अर्थ. अब वो फीलिंग गिल्टी फील कर रहा है, अशेम्ड है कि उसे कुछ भी अच्छा याद नहीं है. ही ओनली रिमेंबर्ड द बैड डीड्स अबाउट हिज पास्ट लाइफ रिजल्टिंग हिज शेमफुल अपीयरेंस बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. दिस रिपेंटेंस ऑफ हिज कॉन्शियस वॉज द मोस्ट अप्रिशिएटेड बाई गॉड एट वंस. अब जो अपने किए पे वो शर्मिंदा है, अपनी गलती पे नादम होना, अपना गुनाह को मान लेना, अपनी गलती को तस्लीम करना और आजिज़ी उसकी खुदा को पसंद आई है, और बता रहे हैं कि वो क्यों अशेम है, वो अपनी डीड्स की वजह से अशेम है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन क्या है? ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, personification is a literary device used to attribute, associate,
features characteristics of a living thing, human being, to non-living things like the blade of grass, a stone, or a pen, or a book. Resultantly, they start speaking for itself. The blade of grass is an example of personification. पर्सोनिफिकेशन वो लिटरेरी डिवाइस है या वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देते हैं. द ऑब्जेक्ट में बी ब्लेड ऑफ ग्रास, स्टोन, पेन, बुक, चेयर, etc. ब्लेड ऑफ ग्रास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. कैसे पर्सोनिफिकेशन है कि इसमें ब्लेड्स ऑफ ग्रास को एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई किया गया है कि वो ऑन द डे ऑफ जजमेंट बिफोर गॉड दे आर स्टैंडिंग एंड गिविंग अकाउंट ऑफ देयर गुड एंड बैड डीड्स.